अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं जी साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड। ये आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कहा हुआ था, मैंने इसकी फाइल को अलग किया है, तो चले जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले कहीं भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पहला एमसीक्यूज है जी, मैं डायरेक्ट आपको इसके आंसर्स बताती जाऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता बोलूँ। Psychology is defined as the science of behavior and mental process. Who is considered the father of psychology by his establishment of the first psychology lab? William Wundt. Which of the following is considered the founder of the psychodynamic perspective in psychology? Sigmund Freud. The behaviorist believed psychology should only study observable and objectively describe act. The psychological school of thought that stressed the whole or complete view of situation was Gestalt. जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, जैसे गेस्टॉल्ट के बारे में, आपको विलियम वार्स के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। सो आप मेरी वीडियोस लाजमी देखिएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने ये वीडियो ही में से बनाए हैं। तो चलिए जी, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट, one must understand the unconscious mind and key events that happen early in the life that influence the unconscious mind. What is this school of thought? ये क्या चीज़ थी? हम लोगों ने पढ़ा था साइको एनालिसिस के बारे में। ये साइको एनालिसिस था। Manifest content of a dream is the obvious and apparent part. Who established the first psychology lab in the United States? ये हमारे पास था जी जे स्टैनले हॉल। उसके बाद है जी एडवर्ड टिकनर used a method for studying the mind that became very popular during the structuralist period. The method called dash required trained participants to report their conscious mental experience to the investigator. For example, if a person was angry, they would report all their experience during the time they were angry. अब ये किस चीज़ की हम डेफिनेशन बता रहे हैं जी? इंट्रोसेप्शन की। इंट्रोसेप्शन में था कि ये मेथड था कि जब आप ट्रेन करते हैं किसी पार्टिसिपेंट को, वो रिपोर्ट करता है आपके कॉन्शियस मेंटल एक्सपीरियंस को, जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है उसके सामने, तो इसे हम कहते हैं इंट्रोसेप्शन। Dash is the school of thought in where psychology is defined as the study of structure of the mind. Structuralism. देखें, structure of the mind है तो structuralism होगा। Dr. Osman studies the diagnosis, causes, treatment and prevention of mental illness. Which type of psychologist is Dr. Osman? That is clinical psychologist. क्योंकि उन्होंने clinic में study किया था। Which of the following model believe that behavior is motivated by inner forces over which individual have little control? Psychodynamic model. मैंने ये आपको complete बता रखा है। मेरा तो है कि आप लोग पढ़ें ताकि आपको long और short question इसमें से हो जाएं। Which of the following school of thought focus on what the mind does and how it does? That is functionalism. Which one of the following drug is stimulant? निकोटीन जो थी वो stimulant के as use होती है। Tahir often experiences intense feeling of anger and frustration. In order to cope with these feelings, he enrolled in kickboxing class as an outlet of his emotion. Tahir action are example of which type of defense mechanism? That is sublimation. ये defense mechanism में था कि उसे गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा पंचिंग बैग में निकाल रहा है, तो उस process को क्या कहते हैं? Sublimation. Which type of learning process did Burhas Frederick Skinner describe? That is operant conditioning. Dash refer to genetic composition of a person, that is genotype. In a correlation study, when one variable goes up and another goes down is known as negative correlation. A researcher assessed information on the internet from the series of survey of women that was conducted during the 1970s to 80s. The data was analyzed to examine change in attribute and behavior over time. Which of the following method was used? That is archival data. फिर हमारे पास है जी, a researcher want to study the effect of violence displayed in movies on a children behavior. In this research, violence displayed in movie is the dash variable as it manipulated by the experimenter. ये independent variable था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास जी, the brain and the spinal cord
comprise which of the following nervous system? That is central nervous system. The lobe of the cerebral cortex responsible for motor control and higher mental process is known as the frontal lobe. The band of a muscle behind the cornea that give the eye its color and control the size of a pupil is known as the iris. Iris होता है जी और the dash theory suggests color vision depends on a red, green, blue, yellow and black white process in the brain. It suggests that the receptor cells are linked in pairs and they work in opposite to each other. ये ओपोनेंट प्रोसेस है काइंडली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एबनॉर्मल सेक्रेशन रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड एरोक्रेटिन ये 2 मिनट में से चेक करती हूँ ये मैंने क्या लिख दिया कॉल्ड इक्रेटिनिज्मा अब ये क्या बनाती है जी थायराइड ग्लैंड व्हाट इज द कंडीशन डेफनेस अब डेफनेस की क्या कंडीशन Hearing loss due to problem with the bone of the middle ear. Deafness हमेशा हमारे पास आती है hearing loss due to problem with the bones of the middle ear. Who were interested to study how combinations are acquired and used in a various group or institutional setting? किसने कहा कौन इंटरेस्टेड था जी इसमें सोशियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं डैश रेफर टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन क्या चीज़ रेफर करती है जी टेम्पोरल एस्पेक्ट हु डेवलप रैबिट ये कौन सी थ्योरी है जिसे रैबिट कहा जाता है ये एब्रिवेशन है रैबिट इसकी ये है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थ्योरी ये जो एब्रिवेशन होती है ये भी याद रखिएगा किसने दी थी ये थ्योरी एल्बर्ट एलिस ने इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑडिपस कम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व फैलिक स्टेज पे होता है जो ऑडिपस कम्प्लेक्स हम ढूंढ सकते हैं ये हमें नज़र आता है वाइल मेंटेनेंस rehearsal will help keep information in short-term memory for a longer period of time. It does not help transfer information into long-term memory. In order to get information into long-term memory, we need to engage in elaborative rehearsal. Okay, अब हम चलते हैं जी in sensory memory, visual stimuli are held for a very brief time as dash memories, as iconic memories, whereas auditory stimuli are held as echoic memories. Which of the following is not true? The following long-term memory. अब हमें बताना था कि long-term memory में क्या चीज़ true नहीं होती. It has about 7 slots or chunks for information storage. ये true नहीं होता. People do thinking like words of all different reasons. Some work for money. Some work for like work. People do things like work for all different reasons. Some work for money. Some work for power. Some work for satisfaction. Internal motivation that causes us to do something because we receive self-satisfaction is called intrinsic. Which of the following is not a biological motive that operates within a homeostatic cycle is not regulated by homeostasis? That is, sex. John B. Watson believed that psychology should involve in the study of behavior. A dash n या n होता है या a कर दें dash is a measure of how strongly two variables are related to one another correlation. A variable that an experimental manipulated is called as independent variables. Observing behavior as it happened in a real life natural setting without imposing laboratory control is known as naturalistic observation method. Who claimed that behavior is affected by positive reinforcement? B.F. Skinner. B.F. Skinner ने क्लेम किया था कि behavior जो होता है वो positive reinformation मिलता है. इंशाल्लाह ताला मैं इसके अब नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ पार्ट बी उसमें मैं ज़्यादा MCQ कवर करने की कोशिश करूँगी. चलें थोड़ा सा अब ये भी देख लेते हैं. A detailed description of particular individual being studied or treated is called a case study. The psychodynamic perspective was based on the work of Freud. Freud की बेस्ड हुआ था ना ये वर्क. Who was an early proponent of functionalism? William James. Which of the following terms do not belong together? ये है जी structuralism, observable behavior.
The whole is greater than the sum of parts, a statement associated with the perspective of Gestalt psychologist. ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.